Hello everyone, welcome to Decipher's Toppers Talk. Today we have with us Mr. D. Hima Vamshee and he has scored AIR 548. He will be sharing with us sociology strategy. So over to him. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. So I'm grateful to you for providing me this opportunity to be here. I have been a beneficiary of such. Am I audible, ma'am? Yes, you can speak a bit louder. I have been a beneficiary of such sessions which have been earlier held on the channel. So I think it is now my time to give back to the community. Let me share the PDF, the PPT. So is the screen visible? Yes, it's visible. Okay, ma'am. So this is a brief introduction about me. I'm Vamshee. I have secured All India rank 548 this year. I hail from Telangana and I have done my graduation from IIT Roorkee, passing out in 2018. So I have given 5 attempts in UPSC. Since I've finished my college, I have started preparing and appearing in the attempts for UPSC. I have appeared in 3 mains, 2 interviews, and this is the first time I got selected. I have had sociology optional throughout. So the first 2 attempts, I did not clear prelims. Thereafter, I have been clearing prelims and mains. I have appeared 2 interviews. So this is my mark sheet for 2022 exam. So if you see sociology, I've scored 127 plus 125, which are not exceptional numbers, but they are decent numbers given the marking pattern for sociology this time. And so after my all experience of 5 years with sociology, so I came up with this 10-point strategy for sociology, like how to start with and how to improve marks, etc. This caters to the needs of everyone, like who is just starting with sociology, but also people have finished studying and about to start writing answers. और ये उन लोगों के लिए भी सही है जो मतलब मेंस दिए हुए हैं ऑलरेडी और इम्प्रूव करना चाहते हैं मार्क्स. So these are the things I've learned throughout my journey. And a small disclaimer that these are the things which I have done, which have decently worked for me. And this is not the only way to do it. There are multiple ways to do it. There are many people who have employed other strategies and got selected. But having said that, so this is something which I have evolved upon. Like I did my mistakes, I have learned from them, and this is the strategy I came up after doing all those mistakes and refining that strategy. So the first thing here is to memorize syllabus and to go through the PYQs. So this is the most important step, not just for UPSC, not just for sociology optional, but for any exam. So this is the basic thing which we will have to do. For example, if we have to frame the question paper for a 10th standard examination, we will look at the PYQs and we will try to set the paper based on that. So this is the most important step. And looking at the syllabus and memorizing the syllabus, it helps us to interconnect the concepts. मतलब जब syllabus का हर एक word हमें याद है, तो हम interconnect कर सकते हैं different concepts को. वो मतलब अच्छा आंसर बनाएगा. And it also helps in understanding what to emphasize on. PYQs देख के हमें समझ आएगा कि ये चीजें मतलब इन पे ज्यादा emphasis डालना है, इन पे थोड़ा कम emphasis डाले तो भी चलेगा. And questions do repeat from PYQs. That is another reason why we have to go through PYQs, and more on that later. The second point is to develop good understanding of the concepts. The conceptual clarity जो है ये this is paramount. अगर conceptual clarity नहीं है तो हम अच्छे answers लिख ही नहीं पाएंगे. और optional is a very specific subject. You have to have good conceptual clarity to write good answers. And इसके लिए आप मतलब अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते हो तो ये वाचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब आर इक्वली गुड. मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है,
और मैंने इसके लिए स्लीपी क्लासेस का वीडियोस देखा था, और एक क्रैश कोर्स सोशियोलॉजी करके एक चैनल है, दैट इज आल्सो वेरी गुड. क्रैश कोर्स इज द चैनल नेम एंड क्रैश कोर्स सोशियोलॉजी इज द course they run. So that I think is a US based channel, but it does give important insights into sociology. बाकी मैम के चैनल में डिसाइफर सोशियोलॉजी में भी मैंने बहुत वीडियोस देखा था जहाँ पे मुझे डाउट है, एंड मैम वाज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प. wherever I had doubts, she was ready to help me with whatever doubts I had. And after this, one needs to keep their resources limited. So I did this mistake. I did run around and run behind many sources. मतलब महापात्रा सर के नोट्स, उपेंद्र सर के नोट्स, ये सब मैंने भी मतलब ऑर्डर भी किया था, है मेरे पास अभी, पर कभी मतलब उतना पढ़ा नहीं. तो देखा था, but it's like those notes were specifically made by the people like who were attending classes, and they would be able to better understand and comprehend those notes. I felt like if I have to read them again and comprehend them again, it would take me much longer time. तो इस वजह से I did not find much utility in them. तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने सोर्सेस लिमिटेड रखें. इससे मतलब मल्टीपल रिविजन्स भी होंगे और चीजें आसान होंगे. एंड एनीवे, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो you don't need 250 more than 250 to 300 words to write answers. तो इतने में ही अपने आंसर होंगे. So for that I had my base material. This is the final base material which I mean. I did go through Harlan Bose, a few chapters of Harlan Bose, a few chapters of Ritzer, but I felt that मतलब वो सब पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सोर्सेज जो है नितिन सांगवान सर के बुक, स्लीपी क्लासेस के बुक, these are basically notes from those standard books only. So I felt, and I still feel, you don't have to read complete Harlan Bose or complete Ritzer for that matter. ये दोनों मतलब मेरे बेस मटेरियल रहे थे, नितिन सांगवान सर के बुक और स्लीपी क्लासेस वाले नोट्स. और इग्नो मटेरियल जो है ये मतलब थिंकर्स के लिए अच्छा था. इग्नो मटेरियल इज एक्चुअली वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज इट्स वेरी बल्की. तो द बेसिस ऑफ दैट मटेरियल इज दैट इट इज फॉर डिस्टेंस लर्निंग, और डिस्टेंस लर्निंग करने के लिए काफी एलैबोरेटली चीजें समझाना पड़ता है, एंड इट इज डन इन इग्नो. तो it will provide good conceptual clarity for thinkers, and thinkers is the main foundation of sociology. And uske baad matlab I don't think we have to do it for every topic because that is very bulky. And BK Nagla book I did use selectively for some Indian thinkers, especially the ones mentioned in paper 2, and other important ones like Andre Bite, Louis Dumont, etc. और इसके बाद आता है कि we have to make short notes and revise multiple times. So by doing this quick revision, we will be able to better retain the stuff, retain the information which we are reading, and that is very important for us. So by multiple revisions and retention of that, we will be able to better reproduce in our answers. So ये short notes जो है, it will also provide us with a collection of keywords, especially sociological keywords. इन्हीं के हेल्प से हम सोशियोलॉजिकल आंसर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जीएस आंसर्स से. So this is an example of the crisp notes which I have made. So if you can see alienation के बारे में, there is an introduction or a definition there. There are some ideas or quotes of Marx. There is the book which alienation is mentioned, and then briefly I have given about like alienation happens in 2 ways. There are 4 types of alienation. इसके साथ you also need to add these things like the criticism by thinkers, recent examples, and initiatives to overcome alienation. तो ये सब मिलके हमारा crisp notes बनता है, and I study only this much for alienation, and this much is enough to write a decent 250 or 300 word answer by elaborating here and there in this. एक 2 डायग्राम भी मिले तो बना सकते हैं इसमें. And this is what is my pointer notes. By making these notes, like when I'm referring to class struggle, I make all the pointers, the sociological keywords which are present in
I made this from Nitin Sangwan. So if you see, for example, here we have written class polarization, pauperization. These are the sociological keywords. क्योंकि मतलब जीएस में अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, पर उसी का सोशियोलॉजिकल कीवर्ड बनेगा क्लास पोलराइजेशन. द रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर. मतलब वही है, बट इफ यू पुट इन अ सोशियोलॉजिकल कीवर्ड इट मेक्स द आंसर मोस्ट सोशियोलॉजिकल. सिमिलरली यहाँ पे ये डिवीजन ऑफ लेबर का है, एंड इवन व्हाइल स्टडीइंग डायरेक्ट क्राइम यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म कॉल्ड सोशल सॉलिडारिटी. जीएस में लिखेंगे तो हम लिखते हैं कि यूनिटी है सोसाइटी में. द सेम थिंग व्हेन यू राइट इन सोशियोलॉजी यू राइट इट एज सोशल सॉलिडारिटी. So this kind of tweaks can improve our marks by using the sociological keywords. And the fifth point is that we need to do value addition. Kyunki we all want marks ultimately. For that, we need to put in some effort and we need to use relevant thinkers, examples, case studies and diagrams here and there. But at the same time, we need to keep them relevant and optimal. अगर इसको overdo करेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा. ये ब्रेड एंड बटर वाला एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त ने बताया था ये कि सो दिस इज समथिंग नॉट कंप्लीटली माय स्ट्रेटजी, बट आई हैव आल्सो टेकन इनपुट्स फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव स्कोर्ड रियली वेल इन सोशियोलॉजी लाइक 270 280s एज वेल. तो ब्रेड एंड बटर वाला एग्जाम्पल उन्होंने ये बताया कि जो स्टैंडर्ड मटेरियल जो है हम पढ़ते हैं वो ब्रेड है एंड द वैल्यू एडिशन यू डू इज द बटर. जब मतलब ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ बटर है तभी मतलब उसमें टेस्ट आएगा. अगर बहुत ज्यादा बटर डालोगे वैल्यू एडिशन हियर तो इट डज नॉट टेस्ट रियली गुड. तो वो कॉम्बिनेशन मतलब ऑप्टिमल ही रहना चाहिए. बहुत ज्यादा भी करोगे तो बिगड़ जाएगी. एंड वन मोर थिंग इज दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज स्टैंडर्ड थिंकर्स ओवर द लेसर नोन वंस. जो मतलब क्रिटिकल थियरी पे लिख रहे हो तो मार्क्स वगैरह इन सबको पहले लिखना चाहिए, उसके बाद ही जो लेसर नोन थिंकर्स है वो आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर वी सी द दिस इज द थिंकर्स नोट्स हैव मेड. फॉर एग्जाम्पल कास्ट है तो कास्ट पे कौन कौन थिंकर्स है प्रोमिनेंट, इनका एक नोट्स बनाया था मैंने. इफ यू सी घूरिये, एम.एन. श्रीनिवास, लुई डुमोन, आंद्रे बीते, दीज आर द प्रोमिनेंट थिंकर्स. तो इनको मैंने ऊपर ही लिखा है. और इनके बाद मतलब जो थोड़ा सा लेसर नोन थिंकर्स है उनको भी लिख रखा था. अगर इट्स अ लार्ज क्वेश्चन देन मे बी आई हैव टू यूज दीज थिंग्स. So that is why I have them there. But if it is a broader question on a caste, then I will use the prominent thinkers first. And that has to be the case in point. और मेरा शायद पहले पेपर 2 में 96 मार्क्स आए थे लास्ट अटेम्प्ट पे, और इस बार 125 वन आए, मतलब प्लस 30 मार्क्स हो गए थे. आई थिंक दिस वन वाज एन इशू. लाइक आई हैव डन लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन and I was expecting to get 130s or 140s. बट वही है ना कि मतलब बहुत वैल्यू एडिशन डालोगे तो उतना टेस्ट सही नहीं बन पाएगा. शायद उसी वजह से मेरा 96 आया. इस बार आई डिड करेक्ट दैट and I did prioritize standard thinkers over the lesser known ones. So my score in paper 2 increased by plus 30. And these are some diagrams which you can use. So indicating class polarization, which was Marx's idea, and middle class enlargement, which Weber has specified. So these are some things. By making a diagram, it makes it easier for the examiner to understand, and it also breaks the monotony of the paper. बाकी ये भी फर्स्ट चैप्टर में आप यूज कर सकते हो. 3 टाइप्स ऑफ मॉडर्निटी जो आए थे. And connecting with recent examples is also another important value addition technique. For example, ये first वाला example देखोगे, Dalit youth killed for riding horse in Gujarat. You should be able to connect this example with the caste aspect, caste discrimination, and also stratification. This will happen only when you have good idea about the syllabus. COVID lockdown में increased domestic violence against women. Gender abuse में you can add this. Family में you can also include this. How the structure, not the structure, but the interactions are changing. And social distancing, how it emerged into a new form of untouchability. So these are all examples, and you should be able to connect them with the syllabus points. And for that, you need to be well versed with the syllabus.
in the first place. And after doing all that, daily answer writing, I believe, is very important, because ultimately having that material, doing all that value addition is one thing, and how we integrate everything into our answers makes everything, that is how our answers are made. I mean, if it looks very forced and mechanical, obviously we would not be getting marks. So it has to flow seamlessly. And I would suggest like writing 2 answers every day. 2 answers is not much, and you can start with 2 answers every day. And with time, you will improve a lot. And notes and answer writing should go hand in hand, because most of the times, if you see, the better your notes are, the better your answers happen to be. As you've seen my notes of alienation, so I believe that's a decent notes. And every time I read that, I revise that multiple times, and that is what I reproduce in my answers. So I believe both of these go hand in hand. Just give me a minute. Yeah. And after writing these answers, we have to improve on each aspect of the answer. So basically, we have to break down the answer into different aspects, like the introduction, conclusion, value addition, etc. And we need to make a checklist of these parameters. तो वो दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनाया था मैंने, और उसी के हिसाब से हम रेगुलरली एसेस करना है हमें हमारे आंसर्स को, और जिसमें वीक एस्पेक्ट्स लगे हमें कि अगर इंट्रोडक्शन इज वीक, कंक्लूजन इज वीक, then we have to consciously improve on those areas. So that is how our entire answer will improve. These are all tiny improvements, but by improving these all aspects, you will find that there is massive improvement in the final answer. So this is how I've made evaluation parameters chart. Like I had understanding the demand of the question, which is very important, which is vital, and then the context relevance, introduction, expression of thought, sociological perspective, and keywords. So I felt that these are the aspects which matter, and these are what make a sociological answer good. So that is why, like whenever I wrote an answer, see, this was an answer I wrote, and I marked how it is faring on in these parameters. Like if it is average, or I have to improve on this, and then in this everything was fine, decent. So after writing 5 or 10 answers, you can assess yourself. So the conclusion here seemed to be average in most questions. So I felt like I have to improve conclusion, and then I made a dedicated notes for conclusion, topic wise. Hello, can you see the screen? Yes, sir. Okay. So I have made a notes for conclusion, which helped me further in improving my conclusions going forward. And I believe this is very important in improving answer writing. Yeah, these are some of the notes I've made. Like I'm showing a sample here. Having ready-made introductions and conclusions help us very much. It helps us very much in the exam, because we don't have to think in the exam. And thinking is where most of the time is gone, because our hand can write, but the speed which we need in mains answer writing, वो ज्यादातर मतलब दिमाग का है. अगर जल्दी सोच पा रहे हो तो जल्दी लिख पाओगे. लिखना उतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना सोचना है. इसीलिए ये सब मतलब पहले सोच के जाओगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. क्योंकि मतलब सोशल मूवमेंट तो हम सब जानते हैं, वी ऑल नो व्हाट अ सोशल मूवमेंट इज. But if someone asks you suddenly define a social movement, it would be very difficult to define. So you can try that with any other sociological keyword. It will be difficult. But if you have it beforehand, like it is defined as a sustained collective action, etc., etc., and this is a definition given by Giddens, so it has a validation. It's not that we are making it by ourselves. So if you can remember this and reproduce in the exam, it will be very helpful. बहुत जल्दी introduction हो जाएगी,
और अपना मतलब आगे का काम में थोड़ा और टाइम मिलेगा सोचने के लिए। यही 1-2 पॉइंट 1-2 मिनट बहुत मैटर करता है यार एग्जाम में। सिमिलरली कंक्लूजन्स भी है। कंक्लूजन्स में इफ देयर इज सम क्वेश्चन ऑन रिलीजन्स, आई वुड स्ट्रेट अवे यूज दिस कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन्स और इंट्रोडक्शंस रेडीमेड वाले ऐसे होना चाहिए, यू कैन फिट देम इन एनी रिलेवेंट क्वेश्चन। अब ये रिलीजन वाला किसी में भी मैं फिट कर सकता हूँ, और लास्ट वाला भी, इफ फैमिली मैरिज के चेंजिंग एवॉल्विंग पे कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं ये फिट कर सकता हूँ। डोंट मेक देम टू स्पेसिफिक टू एनी वन क्वेश्चन। तो ये एक चीज है। एंड आई वुड सजेस्ट प्रिपेयर मॉडल आंसर्स फॉर PYQs, क्योंकि इफ यू एनालाइज द PYQs यू विल सी मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। पेपर 1 में स्पेशली अबाउट 70% आर रिपीटेड, and paper 2 mein near about 40 to 50% are repeated. So I would suggest you to brainstorm on the PYQs, specifically the last 5 years. We have done this process with a friend, and we did brainstorm important points and interconnecting with the topics, what all things we can put in an answer, which makes it a decent sociological answer. And if you have seen the paper, you will know this, that there are 28 questions in the paper, including the choice. From that, you have to pick 19. So basically, they are divided into sets of 8 questions. Question 1 and question 5 are compulsory. And from 2, 3, 4 and 5, 6, 8, you have to choose 3. You have from 6, 7, 8, you have to choose 3. And out of those 3, you have to choose at least 1 from each section. So basically, that turns out to be 19 questions in total. And by doing this exercise of preparing model answers for PYQs, हमें मतलब 13 to 14 क्वेश्चंस का कंटेंट बिफोर हैंड रेडी रहना चाहिए। एंड यही हमें स्कोप भी देता है कि ज्यादा स्कोर करें एज कंपेयर टू जीएस पेपर्स। जीएस पेपर्स में इफ यू सी द स्कोर्स आर अराउंड 110 120, बट इन 100 110 में रहता है यूजुअली जीएस पेपर्स में, एंड इन ऑप्शनल्स दे आर अराउंड 140. So if you do this exercise, it will put you in a very better place, a good place to score 140s, and it also saves a lot of time in the exam. ये एक PYQ मॉडल आंसर है जो मैंने बनाया था आपको दिखाने के लिए कि how is sociology related to common sense was the question. So in this I defined common sense here. So this is a ready-made definition you can have for common sense. This is given by Alfred Schutz. Baki, you write a little bit about common sense and then you show the difference there. Like whereas sociology attempts to be value free and establish causal explanations. And you also give an example here. This is a commonsensical belief that hard work inevitably leads to success. पर अक्सर ऐसा नहीं होता है. There are many racial and gender injustices, gender wage gaps भी है, और ये सब sociological studies के through open up होंगे. एंड बाकी ये जो कॉन्सेप्ट्स है कि एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट, सोशल कैपिटल एक्सेट्रा, यू कैन राइट दीज थिंग्स. हाउएवर देयर इज एन इंटरप्ले बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. ऐसा नहीं है कि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, बट देयर इज एन इंटरप्ले. फॉर दैट यू कैन यूज दिस डायग्राम. ये सब मतलब एग्जाम में करना तो बहुत ही मुश्किल है. अगर आप पहले प्रिपेयर करके जाओगे ये सब, देन इट विल बी इजियर इन द एग्जामिनेशन. The common sense, it does provide raw material for hypothesis building to sociology, and sociology basically refines and enriches common sense. So this is a simple diagram which makes a lot of sense and it speaks a lot of words. It saves your space as well. And then you give an example in justification for that diagram, like it helps in providing hypothesis building. You give also examples how sociological studies help in breaking common stereotypes. You provide the example of Margaret Mead here. And then you show how sociological studies, when they become popular, they turn into commonsensical knowledge. So Gideon's study was there about marital breakdown. After that study was made, it led to the commonsensical perception that marriage is a risky proposition. So, and you also have a decent conclusion here that they are intertwined and mutually reinforcing each other's subject matter. So, ये सब पहले करके जाओगे तो it would be very easy to reproduce in the exam. And after that, the 9th point, the last but one, is to
give full length mock tests. So writing 2 good answers one day is one thing, but writing 19 decent answers, that too in a time limit, an exam like condition where there is a lot of pressure in 3 hours, is a totally different ball game. So while writing these answers in mains, you have to take care of these 3 pillars. मतलब मेंस आंसर राइटिंग का 3 पिलर होते हैं, जितना मुझे लगता है कि एक है कंटेंट, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है स्पीड. इन तीनों में कहीं भी मतलब कमी रहना नहीं चाहिए. Obviously मतलब you cannot be at your fullest in each of these, but you need to balance out these 3 things so that you are at the best. You are at your best while including these 3 things decently. तो अगर आपका मतलब स्पीड कम है तो यू हैव टू वर्क ऑन स्पीड. एक मतलब 7 मिनट का क्वेश्चन को 5 मिनट में लिख के देखो, वैसे आपका स्पीड मतलब बढ़ेगी धीरे धीरे से. अगर प्रेजेंटेशन कम है तो टेक सम मोर टाइम, एज अपोज टू 7 मिनट्स यू कैन टेक 9 मिनट्स, बट present it well. Similarly with content, take a bit leeway on time, take 9 or 10 minutes, but write good content. Try to interconnect things with different parts of the syllabus, and that will give you an edge. And while writing full length mock tests, you need to stick to time limit and revise your notes multiple times. The low scores, you might get low scores to start with when you stick to time limit, and some questions might be left out. But low score is not a problem. Stagnation is. I mean, if you are scoring low again and again and again, if you are scoring like 70, 75, that is a problem. And you need to rectify your mistakes. You need to identify why you are scoring low, and that is how you will improve on from the next paper. And you need to consciously do this exercise. So some insights about attempting the paper was, this was my schema for sociology paper. As I've said, 2 questions are compulsory, and the other 3 questions you have to choose. And the 2 compulsory questions, I felt like it is better to write them straight away, because you anyway don't have any choice in that. You have to write them. After writing that, I felt that it opens up our mind. Like, we have addressed so many questions. We have written 10 questions there, 5 in question 1 and 5 in question 5. So then we will be in a better position to decide on which other questions we have to write. Sometimes you would have used a certain content in question 1 and question 5, which you maybe you don't want to use again in the other questions. So that way, after writing question 1 and 5, you will be in a better position to decide on which, and take 5 minutes to decide on which questions, because it matters a lot which questions you choose. There are 3 questions, and in some of them, you might not know the 10-pointer. In some of them, you might not know the 20-pointer. Preferably choose the questions in which the 20 pointers, you know the 20 pointers. So that 40 marks, you know, and 10 marks, you can improvise something, rather than leaving a question like that. If you choose the one which you know 10 marker or 10 marker, and you do not know much about the 20 marker, you will lose much. And this is something which not many are aware of, section-wise prioritizing while writing the paper. If you analyze the previous year papers again, you will get to understand this. In paper 1, in section, the questions in section A come from the chapters 1, 2, 3, 4, 5. And the section B comes from 6, 7, 8, 9, 10. So there might be 1 or 2 odd questions which from chapter 1 to 5, which may be in section B, but that's only 1 or 2. But the broad scheme is this way. And this helps us in deciding which section we might want to attempt to. Because there are some people who will be more comfortable in answering the questions which one can prepare and go. जैसे कि chapter 1 to 5 ज़्यादातर static है, thinkers वाला portion है, और sociology as a science ये सब चीजें हैं, methodology वाला chapter है. तो ये चीजें मतलब उनके लिए अच्छा है जिनको मतलब वो चाहते हैं कि मैं पढ़ के जाऊंगा और लिख के आऊंगा. और chapter 6 to 10 they provide you a chance to improvise.
the questions in these chapters are usually connected to the current affairs. So in that case, if you prefer to write such answers, you may prefer to choose questions from the section B. So in case you know this thing from early on, it will help you in the exam. And similarly, the case with paper 2, section A, part A and part B is mostly static, and part C is mostly dynamic. So it depends on you from which section you want to choose those 2 questions, because from each one you have to choose one, and the second question you have to decide from which section you have to choose. So I was usually preferring to write the questions I prepare and go. So I always attempted the questions from section A. And it depends on your comfort level, which one you want to attend. So paper 2 specifically, these are some points I felt like have helped me in increasing the score by plus 30 marks in paper 2. There are some issues which need a sociological analysis, which were asked earlier in the examination as well. For example, like Me Too, COVID-19, national education policy. On these, it is very much beneficial if you can make an analysis beforehand, and you will have those points so that you can reproduce in the exam. You don't have to think much in the exam there. As if you can see on Me Too protest, I have made this notes. It is not a complete notes, but I have written some things which I can relate to, like a way of organizing solidarity against sexual abuse, objectification of women, and manifestation of patriarchal mindset, etc. And one more point related to that is that while answering in paper 2, we have to think about the points first. And then if we remember the related thinker, we code them. If not, it's fine. It's like the other way around of paper 1, because most of the times in paper 1 answers, we write the thinker first, and then we think about the point which that thinker has said. What he or she has mentioned, then we associate that point with the thinker. But we first think about the thinker. And I think that is beneficial in paper 1, because people who have done like that have scored really well in paper 1. Even I have scored 136 earlier in paper 1, and that has been my approach there. But in paper 2, I believe it has to be this way. Like we think about the point, and after writing the point, if we have that related thinker, if we can remember them, we write them. If not, it's fine. But if we run after the thinkers in paper 2, we don't have as many thinkers there. So if you can see here, I have written like manifestation of patriarchal mindset. And then I did remember the thinker, I have written Nawal el-Saadawi. Similarly here, social media developed a sense of imagined community across the world. I remember the thinker, I have written Benedict Anderson. So this has to be the approach for paper 2, in my opinion. And if we see the frameworks for answer writing, there are different types of frameworks we can use for answer writing. So the first way is thinking syllabus wise from chapter 4 to chapter 10. See, this is again why I say knowing the syllabus is very important. So we have to memorize the syllabus. Here, if you see, for example, there is a question on globalization. We start from chapter 4 and see like what does Marx say about globalization. So it could be the Marxian thought is included, and this idea is again explored in like the exploitation of the global south by the global north, the third world countries. And if you think about Durkheim, functionalist thought is there, like how all the countries, there has to be social solidarity. There has to be social solidarity because everyone specializes in their own arena. When they specialize in their own arena, it helps everyone eventually. Similarly, you can go like that from chapter 5, which talks about stratification. Chapter 6 talks about work. And so in chapter 6, you can see how sweatshops are coming up. How sweatshops are coming up due to globalization. Many are trying to use cheap labor. Informal labor is increasing.
And then politics, how politics is being influenced. And there is nation state, how the nation state boundaries are being blurred because of globalization. Religion, different changes in families are coming up, chapter 9. So there are international marriages. So that is how we can relate syllabus topics. And we can also go perspective wise, as we have seen, functionalist perspective, like everything happens for, I mean, everyone has to cooperate and there is a function for everything in society, whichever happens. Conflict, you can say like the global north and global south are at conflict, such things. Interactionist, feminist also is there, like how women are being exploited, or subaltern thought talks about how the subaltern classes, the Dalits, etc., they are not being given their due importance. And another framework is there, which you can utilize. See, be comfortable with using any of these framework. It's not that one framework is better than another, but in some type of answers, one of the frameworks fits better. For example, if there is a question about COVID and the impacts of COVID, so rather than perspective wise or syllabus topic wise, the functions and dysfunctions framework would fit better, because then it is a phenomenon and it does have positives and negatives. Rather than writing positives and negatives, we write functions and dysfunctions here. So the positives which COVID has had, like it has given freedom, like work from home, and it has also led to lessening of pollution, etc. Such things you can write in functions, and there are some dysfunctions, you can write them in the dysfunctions area. And the fourth framework here is when talking about any social institution like marriage or family, the changes which happen in that can be dealt in this way, like structures, functional changes and interactions. Like the structure of family has changed. Earlier it was a joint family, now more and more they are being nuclear families. That is one aspect of it. And then there are functions, changes in the functions. How earlier family used to have the function of child rearing and also education, also judicial activity. Families used to take care of that. But now there are bureaucratic institutions, there are schools for educating people, there are creches for child caring. And interactions, you can see like how earlier the eldest male was the authority of the family, but now usually it's the breadwinner. So this way you can use this framework. And sometimes you can also sprinkle some key concepts like time space compression, imagined community, etc. This is also one way you can think. You can remember this acronym MTCR FCG PEC. So these are the acronym, it's an abbreviation, like it expands to these things: marriage, mobility, migration, tribals, caste, class, etc. And by using this, it makes us easier to think about a question. अगर क्वेश्चन अर्बनाइजेशन पे है, हम मतलब डायरेक्टली सोचेंगे कि अर्बनाइजेशन का मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे या फिर सोशल एस्पेक्ट्स पे क्या चेंज था, क्या इम्पैक्ट था. It would be difficult to generate like 5 or 6 points. पर अगर इस फ्रेमवर्क में सोचेंगे कि अर्बनाइजेशन का मोबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट था, कि अर्बनाइजेशन के वजह से लोग मोबाइल हुए, कि मतलब अपने विलेज से निकल के सिटीज में जा रहा है. और कास्ट क्लास पे, कास्ट मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विलेज में ज्यादा होता था, अर्बनाइजेशन होने के बाद थोड़ा कम होने लगी उसमें, इट इज डाइल्यूटिंग. सिमिलरली चाइल्ड का, जैसे मतलब अभी चाइल्ड बेयरिंग कम हो रहा है, और रिलीजियस इम्पैक्ट्स, क्लास इम्पैक्ट्स, रूरल अर्बन माइग्रेशन एटसेट्रा. So if you think about in these areas, like how the culture has changed, इस फ्रेमवर्क में अगर सोचेंगे तो थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. And first, I mean, to think about first, it will be difficult, but when you keep on thinking in this framework, it will be easier for you to adapt your thinking in line with this. And the last point is that you have to be confident in your effort. Like you have done enough. So
And as Dhoni, one of my favorite cricketers, like he says, trust the process, and we have to trust the process. As there is only so much we can control, we can only control the controllables. There are a lot of things out of our control. As last time I did expect 280 marks, but I somehow ended up at 250. That is not in our control. We can only do the things which will give us a better chance. See, there is subjectivity, there is luck or fortune or destiny, whatever you call it. Not just in this exam, but in life, it is everywhere. But yeah, that should not hinder our hard work. We need to be working hard always. And sometimes the stars do align. And as they say, like hard work, it puts us in the place where good luck can find us. So if we do hard work, we will enter into that area where good luck can find us. And so basically, it's like if you are in a range of scoring, for example, let's say 200 to 250, 200 to 230 in optional, that is the amount of hard work we put. On the days we have good luck, we will be scoring 230. But if you do this hard work and get into the range of like you will be scoring 270 to 300. At that time, even on the days you have bad luck, you will be scoring 270. So that is how luck works. So you have to be working hard always. And I believe all of you will be putting in the efforts and you'll do great. So be confident and all the best, everyone. Yeah. So for other notes and other strategies, this is my Telegram channel. You can follow this. For sociology notes, all the things I've discussed, I did upload some of my notes there. And even other, I would probably be discussing about essay strategies and some of the strategies I've utilized for general studies. Yeah, that is it. Thank you. You can ask any doubts if you have. Yes, sir. I have a doubt. सर जैसे आपने बोला कि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन पहले से या इंट्रो प्रिपेयर करके रखना, तो रिसेंटली मैंने एक टेस्ट लिया था सोशियो का, तो उसमें मैंने प्रिपेयर करके रखा था इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन. दैट इज प्रोफेसर रॉबिन है, उसने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू अल्टीमेट एंड्स एंड स्केयर मीन्स व्हिच हैव ऑल्टर्ड यूज. सो ऐसे इकोनॉमिक्स को उसने डिफाइन किया था. बट देन जब इवैल्यूएटर का रिस्पॉन्स आया तो उसने बोला कि इसमें तो कीवर्ड्स मिसिंग है, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन. तो सर इसका क्या करना है? मतलब किसी भी थिंकर ने कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो बोल के रखा नहीं है. तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि जो आपने बताया है कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, वो ठीक है, इकोनॉमिक्स का वो डेफिनेशन हो सकता है, पर हम सोशियोलॉजी का पेपर लिख रहे हैं, तो हमें ऐसे डेफिनेशन ढूंढना है जो मतलब जिसमें सोशियोलॉजी से रिलेटेड डेफिनेशन होगा. जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ऐसे भी कोई डेफिनेशन हो सकता है. अगर नहीं मिले तो मत डालना, पर ऐसे मतलब टोटली इकोनॉमिक्स रिलेटेड जिसमें इकोनॉमिक टर्म्स है जो सोशियोलॉजी एवेल्युएटर के लिए नए होंगे, ऐसे डालना मतलब उतना अच्छा नहीं होगा. ओके सर. और जैसे सर आपने पीवाईक्यू का बोला कि जैसे आपने पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्म किया, वैसे एक्चुअली हम भी अपने फ्रेंड सर्कल में उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. बट सर उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन का, क्योंकि हम लोग सभी सीख रहे हैं इन दिस प्रोसेस, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन का डिमांड मिस हो जाता है, कभी स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चर में एरर हो सकता है, तो हो जाता है एक्चुअली. तो सर उसको कैसे टैकल करें? मतलब कि पीवाईक्यू को हम लोग बाहर से खरीद ले वगैरह. यार पीवाईक्यू का हमने भी मतलब सोचा था कि कहीं पे मिले तो अच्छा वाला ले ले, पर कहीं पे मतलब अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला था हमें, तो इस वजह से हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था खुद से ही. ये मतलब हाँ, मैं जेन्युइन दिक्कत है ये थोड़ा, मतलब आप कहीं और से देख सकते हो एक सॉल्यूशन वाला खरीद. अभी एक मैंने तो क्रॉनिकल का खरीदा था, लेकिन वो बहुत बेकार है. हाँ. और अभी एक शून्य आईएएस कोचिंग है, उसने निकाला है, मतलब निकाला नहीं है, निकालने वाला है, सैंपल्स कुछ अपलोड किया था. तो
मे बी उसको मतलब खरीदना ठीक रहेगा ना, अगर ठीक ठाक मिल रहा है सोल्यूशन तो। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ठीक ठाक मिल रहा है तो खरीदना है। और ये बात मतलब समझ लेना यार कि ये जरूरी नहीं है कि हमें खुद से ही बनाना है। अगर बनाया हुआ अच्छे से मिल रहा है तो आप उससे ले भी सकते हो। और जो अच्छा, चीजें मतलब हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है वो ऐड करेंगे। मतलब हमें दोबारा सेम मेहनत करने की क्या फायदा है। ओके सर। हाँ और सर, जैसा सर आपने बोला कि क्वेश्चन आप डेली दो लिखते थे सोशो का, वैसे ही कुछ हाँ। मतलब डेली। तो सर उसमें हम लोगों ने भी ट्राई किया, तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या था ना, इवैल्यूएशन का था। आप इवैल्यूएशन कहाँ से करवाते थे वो जो दो क्वेश्चन करते थे आप? वो तो यार मतलब मेरे दोस्त ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ चुके थे उनका, हम्म। तो मैं उनके साथ आपस में शेयर करते थे हम लोग। आप अगर अच्छा। ऐसा नहीं है तो किसी और प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, हम्म। ऐसे डेली आंसर राइटिंग वाला, सोशियोलॉजी हम्म। का। वो भी ठीक अच्छा ठाक एवेल्यूशन कर देते हैं। सर, जैसे इवैल्यूएशन में एक तो था कन्वर्ट आईएस, और एक और था आईएस नेटवर्क। तो कन्वर्ट आईएस वाले को तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने भेजा था, तो वो गलत इवैल्यूएशन करके दे रहा था। अच्छा। और लेकिन तब भी जो आईएस नेटवर्क है वो थोड़ा ठीक, मतलब जो प्रॉपर इवैल्यूएशन था वो करके दिया। तो सर उसमें हम्म क्या हो जाता है ना, जैसे वो लोग का एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, तो उसमें हम्म। लगता है कि कहीं ये लोग को वन नेक्स्ट मेन तक का पैसा दे दो, और लास्ट में ये लोग भी बाद में फालतू करने लग जाएगा इवैल्यूएट, तो वही लगता। यार अब इसका तो हो तो सकता है ये, हाँ। पर आप मतलब आ, उसमें ये दिक्कत है ना कि हमें ज्यादा पता नहीं चलता है कि कौन कर रहा है एवेल्यूएशन। राइट सर। हाँ। सर अगर आपको कोई उसके बारे में पता है, प्रोग्राम वगैरह जो आप रेकमेंड कर दो। ठीक है भाई, आई थिंक मतलब डिसाइफर का भी कुछ था शुरू में, मतलब मैंने उसी में करता था अच्छा। आंसर राइटिंग, प्रीवियस पीवाईक्यू आंसर राइटिंग। हम्म। आप इसका भी देख सकते हो डिसाइफर का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर आपने अभी एक अप्रोच फ्रेमवर्क बताया था कि चैप्टर 4 से चैप्टर 10 तक जाने का, और फिर आपने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे दरखिम वाले से हम लोग सोलिडारिटी का सोच के वर्ल्ड को सोलिडारिटी वाला ऐसे आंसर में लिख सकता है। तो सर लेकिन पेपर में उसको ड्रॉप कैसे करेंगे, कि पर्टिकुलरली दरखिम ने पर्टिकुलरली कुछ सोलिडारिटी ऑफ द नेशंस के बारे में बात नहीं किया, तो उसको इन इन पेपर कैसे लिखेंगे? सॉलिडारिटी इन द सेंस में वहाँ पे जो मतलब सब स्पेशलाइज करते हैं अपने एक में, हम्म। ग्लोबलाइजेशन के वजह से कि मिडिल ईस्टर्न नेशंस अपने ऑयल प्रोसेसिंग में मतलब उसमें कर रहा है, जैसे कि ईस्ट एशियन वाले मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है। तो हम्म। ऐसे ऐसे करके सब अपने अपने में स्पेशलाइज करके वो एक कीवर्ड होता है यार, मतलब मुझे इंटर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो, पर कि हम्म। एवरीवन। हाँ इंटरडिपेंडेंस, हाँ, सॉलिडारिटी। हाँ। इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। हाँ। हम्म। इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन होता है। अच्छा। तो तो ये सब। हाँ लेकिन सर उसमें दरखिम वर्ड तो यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसने नहीं नहीं कहा था नहीं, ऐसे। मतलब जब जरूरत नहीं है तो डरकिंग वर्ड यूज नहीं करना है। मैं मतलब वो थॉट्स अच्छा। का एम्फसाइज कर रहा था कि मार्क्स से हमको कॉन्फ्लिक्ट थियरी याद आएगी, डरकाइम से फंक्शनलिस्ट थियरी। ओके। तो ऐसे। मतलब उस सेम लाइन में थिंकिंग करना, बट उस थिंकर का नेम मेंशन नहीं करना, बस उस लाइन में थ्योरी को आगे बढ़ाना है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ठीक और है। ये भी है कि मतलब जरूरी नहीं है हर थिंकर से रिलेट हो पाएगा हर चीज, ओके। जिनसे हम्म। रिलेट हो रहा है उनसे कर लेना है। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर, और आपका प्रेजेंटेशन वाज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने अभी तक टॉपर टॉक्स का देखा सोशल से रिलेटेड। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। आपको फायदा हो रहा है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। यस सर। इन द मीन गुड टाइम इवनिंग आप सर। इंटरवल्स पे कभी नेक्स्ट टाइम और आया करो, तो बाद में अगर कोई डाउट बनेगा तो आपसे पूछ लिया करेंगे। जी डिसाइफर जी। पे ही आ जाया करो। जी जी बिल्कुल। Hello, I have a doubt, sir. यस प्लीज। Yeah, good evening, sir. या गुड इवनिंग। सर जो अभी बिगनर्स हैं उनको इग्नू मटेरियल रेफर करना चाहिए, नितिन सांगवान डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं?
मुझे लगता है कि थिंकर्स वाला पोर्शन जो है वो इग्नू से करना चाहिए। कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर, मेर्टन, पार्सन्स और मीड, ये वाला पोर्शन स्पेसिफिकली इग्नू से करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जब बढ़िया बेस बनेगी, आप नितिन सांगवान से फिर कर सकते हो। मतलब और उससे पहले थिंकर्स को इग्नू से कर ले, बाकी सारा मटेरियल नितिन सांगवान से रेफर करते हैं। हाँ, बाकी सारा आप नितिन सांगवान से कर सकते हो, पर ये है कि आपको पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप लेक्चर्स देख सकते हो, स्लीपी क्लासेस के देख सकते हो, या फिर डिसाइफर के भी वीडियो लेक्चर्स है, वो भी देख सकते हो। जहां से भी आप कंफर्टेबल हो वो देख सकते हो। और जैसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी आपकी, तो नितिन सांगवान वो डेफिनेटली सफाइज। नितिन ओके सांगवान सर। और स्लीपी क्लासेस कोई नोट्स है वो सफिशिएंट होंगे। तो फिर सर नोट्स कौन सी बुक से बनाए, नितिन सांगवान से और स्लीपी क्लासेस के नोट्स से, या उपेंद्र सर के नोट्स भी रेफर करने हैं? मैंने मैंने तो सिर्फ नितिन सांगवान सर के और स्लीपी क्लासेस से बनाया था। ओके अगर आप सर। उपेंद्र सर से कोचिंग करेंगे तो फिर उनके नोट्स आपके काफी फायदे के होंगे। पर अगर आप कोचिंग नहीं करोगे तो उस नोट्स को समझने ही बहुत टाइम लग जाएगा। एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है। तो इस वजह से मैंने बाकी ऐसे नोट्स अवॉइड किया था। ले आया था, मेरे पास है अभी भी, पर उसको मैं समझ नहीं पाया था। एक तो मतलब वो प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, हैंड राइटिंग गड़बड़ रहता है कहीं पे, और समझ भी नहीं आता है किस चीज को किस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके सर। सर एक हम्म। वही आंसर इवैल्यूएशन का कैसे करें, जैसे डेली क्वेश्चंस तो लिखे हैं, तो फिर कैसे इवैल्यूएशन करें उनका? आंसर एवेल्यूशन का यार, आप अगर आपके कोई सीनियर है तो उनसे पूछ सकते हो कि कैसे कैसे एवेलुएट करें इसको, किस लाइंस में। या फिर आप कोई प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो आंसर एवेल्यूएशन के लिए। और मैं ये बोलूंगा कि अभी से आंसर लिखना भी उतना अच्छी आइडिया नहीं है। पहले आप थोड़ा पढ़ाई करिए। आफ्टर कंप्लीटिंग सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज व्हेन यू हैव टू राइट आंसर्स। क्योंकि आपको मतलब चीजें कनेक्ट करके लिखना है। एज सच मतलब डायरेक्ट किसी एक टॉपिक पे सिर्फ उसी टॉपिक का आंसर लिखना तो होगा नहीं। तो आप पहले पढ़ाई करिए, फिर आफ्टर सब्सटैंशियल अमाउंट तब शुरू कर सकते हो आंसर लिखना। ओके सर। सर सिलेबस का कितना पोर्शन कवर होने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट चाहिए? आप चैप्टर 1 2 3 4 कर लीजिए पहले, उसके बाद 1 2 3 4 का आंसर्स लिख सकते हो, लिख पाओगे। और उसके बाद ना मतलब चैप्टर 5 6 7 8 9 10 थोड़ा रिलेटेड हो जाते हैं थिंकर्स से। अगर आपके थिंकर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो वो टॉपिक्स भी इजी होंगे। तो वैसे सब्सिक्वेंटली यू कैन राइट आंसर्स फॉर ऑल दोस टॉपिक्स। ओके सर, थैंक यू सर। एंड सर जैसा आपने बोला कि आपने नितिन सांगवान और स्लीपी क्लासेस के नोट्स लेके आंसर बनाया, तो सर जैसा आपने शॉर्ट नोट्स हमें प्रेजेंटेशन में दिखाया वैसा बनाया कि थोड़ा इलैबोरेट वे में बनाया था? मेरा नोट्स यही था, क्योंकि मैं नितिन सांगवान को अपना नोट्स ही मानता था। क्योंकि मतलब वो बेसिकली नोट्स ही है, सर के ही नोट्स थे वो। और वो उतना भी ज्यादा नहीं था कि मतलब कुछ 500 पेजेस का था। इट वाज अ डिसेंट अमाउंट। पर राइट हमें सर। मल्टीपल रिवीजन करने के लिए एक पॉइंटर वाइज नोट्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के मतलब जीएस पेपर्स के बाद सोशो के पेपर्स के बीच में अगर हमको 2 3 बार रिवाइज करना है, तो ऐसे पॉइंटर वाले नोट्स भी होना जरूरी है। तो उस वजह से मैंने सिर्फ पॉइंटर 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 लिख के अपना नोट्स बनाया। बाकी नितिन सांगवान को ही मैं अपना नोट्स मानता था। अच्छा। एंड बिट ऑफ स्लीपी क्लासेस भी। और स्लीपी को क्या आप उसके ऊपर ऐड कर देते थे कि बगल में, उसके बगल में पेज वगैरह लगा के, कि अलग से ही वो नोट्स रहता था? उसी में मैं लिख लेता था, अगर मुझे कोई पॉइंट अच्छा लगा तो साइड में लिख लेता था। ओके। क्योंकि सर जैसे उसका मेट्रोलॉजी वाला चैप्टर जो पढ़ा था, जैसे सांगवान में और स्लीपी का, तो दोनों हम्म। का एक्चुअली में थोड़ा कंटेंट अलग है। मतलब हाँ। हाँ, जैसे तो
वो पर्टिकुलरली पूरा तो उसमें ऐड किया नहीं, तो फिर पेजेस ऐड कर सकते हो उसमें। हाँ वैसे ही करके। हाँ, स्लीपी का मेथडोलॉजी में एक्चुअली स्लीपी का अच्छा है। राइट सर। मेथडोलॉजी में स्लीपी का एग्जैक्टली हार्लम बोस जो है, हार्लम बोस का हम्म नोट्स है, तो इस वजह से वो काफी सही लगा मुझे। हम्म। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठेगा, नितिन सांगवान सर का और सीपी क्लासेस का। ओके, तो बस उसका एक थोड़ा पॉइंट है, स्क्रिप्ट नोट्स बनाने का आप मतलब हाँ रिकमेंड हाँ करोगे? हाँ। बस, ठीक है सर, थैंक यू। पॉइंटर्स का कैसे बनाना है मैंने चैनल पे शेयर किया है, आप एक बार अच्छा, देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। ओके मैंने सर। लिंक पे यहाँ पे डाला है चैट में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज या ऐसा कुछ जो आपको बेनिफिट की हो? टेस्ट सीरीज पे मैं ज्यादा कमेंट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने विजन का टेस्ट सीरीज लिया था, पर एक ही टेस्ट लिखा हो उसमें। मतलब लास्ट में थोड़ा बहुत लिख के अपने प्रैक्टिस के लिए लिखा था, पर एवेल्युएशन के लिए एक ही टेस्ट भेजा था। मतलब डिसेंट टाइप ही था वो, कुछ ज्यादा खास नहीं लगा मुझे। ऑल राइट सर। एंड आई बिलीव टेस्ट सीरीज से ज्यादा आपको डेली आंसर राइटिंग हेल्प करेगी। टेस्ट सीरीज बेसिकली वो टाइम मैनेजमेंट के लिए ही है। अगर आपके आंसर्स डेली आंसर राइटिंग में अच्छे आ रहे हैं, तो उसी को थोड़ा टाइम फ्रेम में अच्छे से प्रेजेंट करने का कोशिश करना है फुल टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि मतलब फुल टेस्ट लिखोगे तभी अच्छे आंसर्स बनेंगे। अच्छे आंसर्स के लिए डेली आंसर राइटिंग बेस्ट है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए फुल टेस्ट लिखना जरूरी है। सर आप पेजेस सारे भरते थे क्या, जो 4 पेज आते हैं? या फिर जितना लिखना है उतना अपने हिसाब से ही? पेजेस तो मैं सारे भरता था यार, थोड़ा बहुत एलैबोरेट करके भरता था अगर मेरे पास एडिक्वेट कंटेंट नहीं है, पर पेजेस तो सारे भरता था। मतलब एटलीस्ट फोर्थ पेज का 3/4 तक तो आता ही है आंसर। अच्छा ठीक है सर। और किसी को कुछ डाउट्स है? सर आपने अच्छा वो इस ब्रेनस्टॉर्म सोशियोलॉजी का भी चैनल पे अपलोड करके रखा है, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, ब्रेनस्टॉर्म सोशो। ब्रेनस्टॉर्म सोशो पे क्या अपलोड हुआ है? आप आपके चैनल में ही अपलोड करके रखा है आपने, सोशो P1 PYQ सॉल्यूशन हाँ हाँ ब्रेनस्टॉर्म। हाँ, वही 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 है, वही है। उसमें ओके। से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे करना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मतलब उसमें हैंड राइटिंग वगैरह देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा स्क्रिबल टाइप ही था। हाँ अब ये ठीक है आइडिया सर। नहीं था कि अपलोड करेंगे किसी दिन। ओके। हाँ। और सर उसमें क्या आपने ऐसे B1 B2 करके लिखा है, B4, तो इसका B1 का क्या मीनिंग हुआ? हाँ, उसी के ऊपर एक पीवाईक्यूज वाला फाइल है। अच्छा। तो मतलब जिस चैप्टर में आप चल रहे हो, उसमें बी बी वाला सब टॉपिक है, और बी वाला सब टॉपिक में नंबर 1 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो मैंने ऊपर मैसेज में थोड़ा एलैबोरेट वे में लिखा है उसको भी। ओके। ओके। Good evening, sir. या गुड इवनिंग। Sir, congratulations first of all. थैंक यू, थैंक यू। सर मुझे पूछना था कि आप सोशोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होता है उससे कैसे डील करते थे? जैसे आपने कहा कि कोविड से रिलेटेड, या फिर आपने एक एग्जांपल दिया था कि डेथ हुआ किसी दलित का, तो वो एग्जांपल आप पूरे साल भर रिकॉर्ड करते थे, या फिर आप मैगजीन्स पे रिलाई करते थे, या कहीं और से देख लिया? ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अगर मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त या फिर कहीं पे देखा हुआ है, तो मैं रिकॉर्ड करके रखता था। पर मेजॉरिटी मेरा मतलब इन्हीं लोग ने प्रोवाइड किए थे। कलयुग भाई भी है यहाँ पे, तो they made a compilation, decipher made a compilation of current affairs which can be utilized directly in answers, so that was very helpful for me मेंस में। बाकी मैं भी मतलब कुछ कुछ एग्जांपल्स बना के रखता था।
और एग्जाम्पल्स भी बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर एलियनेशन है तो एलियनेशन में 2 एग्जाम्पल बना लीजिए, बस बहुत है। उससे आगे मतलब आप डोंट सर्च फॉर मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। तो जब मतलब बहुत सारे भी होंगे तो मुश्किल होगा आपको आंसर में रिप्रोड्यूस करने के लिए। यस सर। फॉर एवरी टॉपिक, लाइक इफ यू से एलिट थियरीज में या फिर मिल्स का एलिट थियरी में, वॉट एवर एनी टॉपिक, हैव जस्ट 2 or 3 एग्जाम्पल्स एट मोस्ट। ओके सर। सर जैसे एग्जाम्पल हम सिर्फ वही कोट करें ना जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे हों, जो मतलब ऐसे एकदम बहुत पर्टिकुलर एग्जाम्पल कोट ना करें, जैसे न्यूज़पेपर में केस स्टडीज आती हैं तो उनको कोट करना अवॉइड करें। हाँ यार, बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। जो प्रोमिनेंट है, जो बहुत लोग जानते हैं, उनको कोट करना ही बेनिफिशियल है। ओके सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? Do you want a similar session for GS? यस मैम। यस मैम। For prelims? Do you want a session for prelims as well as, okay, for mains first? Okay, we'll do that. Okay, essay also. Okay, then we'll end this session tonight. We had a wonderful session, Vamshee. Thank you so much and best wishes from the Cypher. Thank you, ma'am. The pleasure is mine. And thank you everyone for attending the session. I hope it was helpful. There's one doubt, I believe. Sorry, ma'am. There's a doubt by Mansi in the chat box. Yeah, Mansi. See, Upendra sir's notes, if you have attended the coaching and you have made notes, I would suggest use those notes. But I don't think, I mean, it is very much beneficial to use the notes someone else has made, because it takes a lot of time in comprehending what someone has written, and there is a context for the things they have written. तो ये सब सोचने और समझने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा. I think Nitin Sangwan sir's notes is a better option if you have not attended Upendra sir's classes. Okay then. Yeah, good night everyone. Thank you so much. Good night everyone.